Hello everyone. So today I'm going to start a new chapter that is a differential equation. तो बेसिकली ये चैप्टर में क्या पढ़ना है पहले वो मैं बता देता हूँ. We know the different methods to find f dash of x for a given function f of x. So what do you mean by f dash of x? That is the derivative of a function. We also know the various methods of integration जो last chapter में discuss किया था. Okay? So here in this chapter I'm going to discuss the methods to find the relation between x and y when the equation involves variable x, variable y and the derivative of y with respect to x. Okay? इसीलिए ये चैप्टर से पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जानना जरूरी है. सो नाउ वी ऑल नो द मीनिंग ऑफ f dash of x. We know the different methods of integration. So in this chapter we are going to study the methods to find the relation between x and y when an equation involves variable x, y and the derivative of y with respect to x. Why we have to include this derivative of y with respect to x? Because the name of this chapter is a differential equation. Differentiation. Okay, so differentiation means derivative only, dy by dx. Okay, so in this chapter first you have to study the meaning of differential equation. What do you mean by differential equation? अगर meaning ही नहीं पता तो chapter कैसे शुरू करोगे? Apart from the definition, then you have to study how to find the order, degree from a differential equation, and then how to form a differential equation from an ordinary equation. एक general या ordinary equation से differential equation को कैसे form करना है, कैसे बनाना पड़ता है. Okay? And also we will study the methods to solve a differential equation. तो क्या क्या points में बताया, क्या क्या study करना है ये chapter से. How to find the order and degree of a differential equation, then how we can form a differential equation from an ordinary equation, and at last we have to study how to solve the differential equations. Okay, so now I'm going to discuss the definition. First of all, the definition of differential equation. So what do you mean by differential equation? देखो chapter का नाम है differential equation. थोड़ा सा hint chapter में दिया हुआ है, that means headline में दिया हुआ है. So definition क्या है? An equation containing an independent variable, ये मैं underline कर देता हूँ, containing an independent variable, a dependent variable and derivative of dependent variable with respect to independent variable is called a differential equation. DE, that means the short form of differential equation. तो differential equation का meaning क्या है? An equation containing an independent variable. I will tell you which one is independent variable and which one is dependent variable. Dependent variable and the derivative of dependent variable with respect to independent variable. ये कंपल्सरी रहना ही चाहिए, तो फिर जाके बोल सकते हैं कि वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है. दैट मींस डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इसीलिए तो मैं डेफिनेशन एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताया, यू हैव टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन एक्स, वाई एंड dy by dx. When the equation contains x, y as well as dy by dx, that type of equation is called a differential equation. That means here one dependent variable is there, one independent variable is there, as well as the derivative of dependent variable with respect to independent variable is also there. Okay, now which one is dependent variable, which one is independent variable, that one you have to identify. देखो, derivative of dependent variable with respect to independent variable. Say if I write dy by dx, an equation contains x, y and dy by dx. So what is the meaning of dy by dx? First of all, you tell what is the meaning of dy by dx. Dy by dx means the derivative of y with respect to x. Yes,
So derivative of y with respect to x, that means derivative of dependent variable with respect to independent variable. So that means the dependent variable is here y. y is the dependent variable. किसके ऊपर dependent है? x के ऊपर dependent है. So that means we can say that x is the independent variable, y is the dependent variable, and the derivative of dependent variable with respect to independent variable. So such type of equation is called differential equation. This is the meaning of this differential equation. Okay, एक equation में जब एक dependent variable, एक independent variable, as well as the derivative of dependent variable with respect to independent variable रहेगा, that type of equation is called differential equation. Okay, now let us take one example. 4 into d square y by dx square. I hope you know this d square y by dx square. That means this is called the second order derivative. और एक बात, हमेशा dy by dx ही रहेगा ऐसा कोई बात नहीं है. dy by dx का मीनिंग है कि फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव. फर्स्ट ऑर्डर के जगह में सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, nth ऑर्डर डिराइवेटिव तक रह सकता है. बट डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा ही. वेदर इट इज फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर और nth ऑर्डर, इट डजंट मैटर, लेकिन एक डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहना चाहिए. ओके, सो 4 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू 0. This is a differential equation. Okay, here one dependent variable is there, so dependent variable is here y, independent variable is x, so derivative of dependent variable with respect to independent variable है, तो ये differential equation हुआ. Okay, second one example you take, dy by dx minus sin x equal to 0. This is a differential equation because here also derivative of dependent variable with respect to independent variable is there. Okay, अभी तुम लोग पूछ सकते हो यहाँ पे तो sin x है. If an equation contains a derivative of dependent variable with respect to independent variable, that equation must be a differential equation. Okay, so here also dy by dx is there ना, minus sin x equal to 0. Whether यहाँ पे sin x के जगह में tan x है या cot x है, it doesn't matter. Okay, so these are the two examples of differential equation. Okay, now the next point, important note है, देख लो. The derivatives are denoted by the symbols. देखो क्या क्या symbols से denote कर सकते हैं. Of course you know dy by dx. dy by dx means first order derivative. d square y by dx square is called second order derivative. d to the power n y by dx to the power n is called nth order derivative. ठीक है, ऐसे भी denote कर सकते हो. और y dash single dash means first order derivative, y double dash means second order derivative, y to the power dash up to n is called nth order derivative, और y1 first order derivative, y2 second order derivative, yn is called nth order derivative. Generally nth order derivative को हमेशा ये फॉर्म में लिखने से ज्यादा अच्छा है, कन्वीनियंट. ठीक है, yn y dash dot 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 n d to the power ny by dx to the power n, same meaning. So the derivatives are denoted by the symbols this. Okay, फर्स्ट ऑर्डर से लेकर nth ऑर्डर तक मैं यहाँ पे लिख दिया. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. मीनिंग तो हो गया, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाउ टू फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. अभी ऑर्डर देखो, ऑर्डर का डिफिनेशन क्या है. द ऑर्डर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. हाइएस्ट ऑर्डर मतलब एक इक्वेशन में मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है. The order of the highest order derivative of a dependent variable with respect to independent variable is called the order of the differential equation. So what do you mean by order? एक differential equation में जब maximum times differentiation किया गया होगा वो ही term order है. Okay, the order of the highest order derivative of a dependent variable with respect to independent variable is called order of the differential equation. Now let us take one example. यही example ले लो तो फिर समझ में आ जाएगा. The first example I have given in the definition of differential equation is 4 into d square y by dx square plus dy by dx whole cube is equal to 0. Of course it is a differential equation. Definition में ही दिया था ये example. तो अगर ये differential equation है तो we can find the order.
What is the meaning of order? The order of the highest order derivative of dependent variable with respect to independent. तो ये इक्वेशन में इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो ये इक्वेशन में मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है पहले वो चेक करो. dy by dx होल क्यूब है. होल क्यूब है मतलब एक ही बार तो डिफरेंशिएट किया गया है. dy by dx. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy by dx? इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव. d square y by dx square. What's the meaning of d square y by dx square? Second order derivative. तो मतलब मैक्सिमम एक इक्वेशन में कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है? 2 बार. सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव है. सो दैट मीन्स वी कैन से दैट द ऑर्डर, यहां पे मैं लिख देता हूं, द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2. ये एग्जाम्पल में यहां पे बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करना है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन का मैक्सिमम जितना बार डिफरेंशिएट किया गया है वही होगा ऑर्डर. सो इन दिस इक्वेशन मैक्सिमम 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है, इसीलिए तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है. कंफ्यूजन मत रखना. डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है, उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है. ओके, लाइक 2 क्यूब मीन्स व्हाट? 2 इंटू 2 इंटू 2 ना. तो यहाँ पे भी वही फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, लेकिन मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है? 2 बार. दैट्स व्हाई ऑर्डर इज 2. इन द सेकेंड एग्जाम्पल इट इज वेरी क्लियर टू फाइंड द ऑर्डर. dy by dx माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0. एक ही तो टर्म है dy by dx. सो इसका मतलब क्या है? कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है? हाइएस्ट नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन एक ही बार. dy by dx means what? First order derivative. So in the second example we can say that the order is 1. Okay, so the order of the second question is 1, whereas the order of the first question is 2. Okay, now I will discuss degree of a differential equation.